foreign country. For example, uh, now I am living in Canada, Toronto. So there are very popular places like CN Tower, Scarewan Mall, as well as there is a very popular place that is Niagara Falls. So I can show them all these places because these places are very popular in my city, as well as the view of these places is very beautiful ठीक है. uh, to enjoy. वेरी गुड. Breathtaking. लिखो एक वर्ड. Oh, There are okay. breathtaking views. Next. Yes. हाँ जी. How often do you visit your relatives? It's to me, ma'am. हाँ बेटा बोलो. Well, I oftenly visit to my relatives like once or twice a month. Um, the reason behind it, the I have a very hectic schedule, so I do not get a lots of time to go somewhere. So once or twice I can go to my relatives. Um, because I'm living alone right now, so I need to meet my relatives, my family members, because um, I can feel the sense of togetherness, because loneliness is very stressful and depressive for me. So I make sure I can go 1 or 2 times every month to ठीक है. my relative. It's once or twice. ठीक है. Once or twice in a month. Next question. How often do you meet your neighbors? Okay. Well, if I talk about neighbors in this country, everyone is busy with their schedule, whether it's old people or youngsters. They all have their schedule according to their work or their schools. So I hardly get time to meet my neighbors. I only get sometimes when I go outside, and suddenly like they met me on a walkway. Then it's only time I met with my neighbors. Otherwise, because of my schedule or their work schedule, we can't get enough time to ठीक. meet with them. अभी neighbor से related लिखो. Neighbors are the first relatives. As we know, neighbors are the first relatives. अब बिजी रहने के लिए, ठीक है, बिजी के लिए एक जी. लिखो सेंटेंस. माय रूटीन, my routine keeps me on my toes. Okay. Keeps me on my toes from dawn. This is DAWN. Dawn to dusk. Okay. DUSK. अब डॉन क्या होता है? सूरज उगने का जो समय होता है, सुबह सुबह जब सूरज Sunset. Sunrise. sun is up, और डस्क होता है then when sun is down. तो Sunset. that means Okay. कि I have the busiest schedule, completely hectic. ठीक है, it keeps me on my toes का मतलब ये हो गया कि भाई मैं बैठने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, सब दाड़ So, दौड़ इधर उधर जा रही हूँ. So my routine keeps me on my toes. As I have Nowadays, I have a routine which keeps me on my toes from dawn to dusk, as I have classes from early morning to late night. Chaliye, next question. What is the difference between a friend and a neighbor? Uh, well,
there is this is a personal perspective, because some people think their neighbors are the friends, but sometimes it's not for other people's. According to me, it's not. There is a big difference between the neighbors and the friends, because the friends always think right for you. If you are doing something bad in your life, if you're doing wrong something in your life, they prohibit you from doing such kind of things. But if your neighbors are not good, they feel jealousy if you are doing good in your life. They always keep an eye on your house, what is happening inside it. I can this is my personal experience. That's why I can say there is a huge difference between neighbor and friend, but this is a personal perception. ठीक है. I agree with you. But believe me, all neighbors are not like this. Many of the This neighbors. is a personal perception, I already I, told. I agree with you. I'm giving my opinion. To some extent, you are correct, but here it is a speaking, na? It's for us. So you are free to give your opinion, beta. Okay. There, next, but you answered very well. Next question is, अच्छा फ्रेंड के लिए आपको मैंने एक इडियम दिया हुआ है, अ फ्रेंड इन अ नीड इज फ्रेंड इन डीड. ओके. Yes, ma'am. सारे फ्रेंड्स नहीं मैं काउंट कर सकती. एक फ्रेंड ऐसा होता है हर किसी का, जो वही ना, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. ट्रू Calm. फ्रेंड वही होता है. तो नेक्स्ट इज, what are the effects of television on a new generation? Well, if I talk about television, there is a huge impact on young generation, Mm, because the young generation more indulge into television or social platforms. mm, So they do their work or things according mm, to that. For mm, example, uh, if there is if they have some favorite celebrity, so mm, they try to copy them by watching them on television. mm, And it may also lead more problems in their lives, mm, because celebrities have different lifestyle. mm, But as a normal people, mm, uh, we don't have that much of money as well as that much of popularity. mm. But youngsters uh, are more. They get influence, है ना, आप ये बता रहे हो. Yeah. They get influence from the TV. But I believe Hmm. आज के टाइम की अगर बात करूं, I personally believe that watching TV is much more better than mobile. Watching TV is much more better than mobile. At least distance पे है. At least टिक के तो बैठ तो एक 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ देख रहे हो. Mobile is what, just scrolling down the screen, और वो बार बार अपने reels देखना, which is really very very bad for the Yeah. youngsters generations. For everyone it is bad. Okay. तो कहते हैं कि जो आप अपनी reels देखते हो, कभी काउंट करना, जस्ट इन 1 मिनट अ पर्सन कैन सी मोर देन 100-200 रील्स. जो शॉर्ट्स देखते हो आप लोग, Yes. है ना. Shorts. अब उनका इफेक्ट क्या होता है, आप भी कभी नोट, इवन आई ऑल्सो फॉलो सच काइंड ऑफ थिंग्स. आई एम ह्यूमन बीइंग. तो वो रील में क्या होती है, आपका ब्रेन इट इज गेटिंग कंफ्यूज. 1 मिनट तो आपने हंसने वाली वीडियो देख ली, 30 सेकेंड या 20, Yes. 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 फिर अचानक से रोने वाली आ गई, फिर Yes. अचानक से हैरान करने वाली, फिर डरने वाली, फिर डराने वाली. सो सोचो, हाँ, कंफ्यूज, योर ब्रेन इज गेटिंग, बेचारे दिमाग को पता ही नहीं चल रहा करना क्या है. ठीक है. करना क्या है. तो वी आर अडल्ट, वी कैन टॉलरेट दिस, पर जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर दोज किड्स. छोटे छोटे बच्चे जो 2, 2.5, 3 साल के, सोचो वो क्या कर रहे हैं. उनको तो रिएक्ट भी नहीं करना आ रहा, रील जैसी आ गई है ना. तो जी जी जी. तो आई बिलीव कि आई सजेस्ट एवरीवन, आई पर्सनली बिलीव, भाई टीवी देख लो, सीरियल देख लो, मूवी देख लो, वेब सीरीज देख लो, टिक तो जाओगे, है ना. Yes. बैठोगे तो सही एक जगह पे. मोबाइल डजंट वांट यू टू स्टिक टू वन प्लेस.
अभी आप इंस्टा में जा रहे हो, अभी आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो, अभी आप Facebook, यूट्यूब WhatsApp. चलाओगे, कभी फेसबुक पे आओगे. सो एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do famous people impress us? Why do famous people influence us? What is the reason? The main reason behind it because we like to watch them. The famous people are famous just because they achieve something in their life and they become a role model to us. That's why we try to imitate them. We try to follow them. Whatever they promote on the television or on the social media, we always mix. We always try to buy it um, and follow the things they are using in their life. So in this way they are influencing to us. Anji, how often do you pray to God? Uh, well, if I talk about my daily routine, so like I like to pray God every day, and well, it's my uh, morning rituals, and I perform it daily because I think this should be one of the most important ritual in your life because it gives you strength as well as it uh, it improves our mentality toward things like how like it changes our mind from negative to positive, or by praying to God we can get happiness, and also sometimes we saw some like we saw something has changed in our life from past and present by praying to God. So that's why I think it's very important for everyone to pray. ठीक है. So I do pray. Okay, next question. Where and when do you pray? Uh, well, every day try to I make sure that I remember to God when I wake up in the morning. I always I always do the prayer to God and pay my homage to God because after doing that, I feel optimistic and confident to go outside because this is the thing which I learned from my parents. So I always make sure that when I get up early in the morning, I I do the pray. ठीक है. So I pray. अच्छा, अब पूजा घर की इंग्लिश क्या होती है? तो पूजा घर जहाँ के लोग मंदिर होता है ना हर किसी के घर में, छोटा सा, द प्लेस वेयर वी डू वर्शिप, दिस इज कॉल्ड ऑल्टर. जी ठीक है. ALTER ऑल्टर होता है जो आप ऑल्टरेशन कराते हो, चेंज वाला. स्पेलिंग इज ALTAR ऑल्टर, TAR इट इज. सो मैडम देयर इज एन ऑल्टर प्लेस मेरे घर पे, देयर इज एन ऑल्टर जहाँ पे मैं पूजा कर सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर प्रेड फॉर समवन? Oh, well, as I already said, it's my morning ritual to pray every day. And yes, of course, I pray for me as well as my family because I think as a homemaker, everyone wish to, everyone um, wishes for a good, wishes good for their family. So if I pray to God for something that makes me happy, then I would always pray for others to make them happy as well, and to make them more successful in life, and it goes for my family and friends. Very good, very good.
चलिए, yesterday we were doing vocabulary. बच्चे, yesterday we did vocabulary for a tour and travel. Remember? Yes. तो कुछ एक वर्ड्स है उसी की फटाफट से लिखो. जो वर्ड्स आपको आते हैं that you can leave, और अगर कोई नया वर्ड है for you, तो you can write it down. Okay. There is a word called itinerary. Itinerary. Okay. ITINEARARY. आइटनरी का मतलब क्या होता है? एक डिटेल्ड प्लान और रूट ऑफ अ जर्नी. जब आप पूरा एक जर्नी का पूरा प्लानिंग करते हो, अपने टिकट से लेकर, बुकिंग से लेकर, होटल्स लेकर, एवरीथिंग. ठीक है. जब तो आप ये बोल सकते हो कि सेंटेंस विल बी ट्रेवल एजेंट gave us an itinerary. तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें पूरा आइटनरी. तो आइटनरी में एवरीथिंग इज. ठीक है. फ्लाइट के टाइमिंग्स तक, होटल्स में क्या डिटेल है, क्या एक्टिविटीज होंगी. तो दैट वर्ड यू कैन यूज द आइटनरी. डेस्टिनेशन, दैट ऑफ इज द प्लेस वेयर आर यू गोइंग. ठीक है ना. where someone is. So Paris is the popular destination. कोई भी जगह. This is the popular destination passport, you know, an official government or document. ठीक है. Identifies that you are holding that you are allowed to go for an international trip. Jet lag. Yes, ma'am. Yes. Jet lag is the tiredness and the other physical effects caused by a long flight across different time zones. जब आप अलग अलग टाइम जोन पे फ्लाइट जर्नी करते हो, जैसे अभी आप लोग कनाडा से इंडिया आ रहे हो, अभी वहां रात है, यहाँ दिन है, तो वो एक दो दिन जो आपको एडजस्ट करने में लगते हैं, इसको आप जेट लैग बोलते हैं. यू ऑलवेज गेट जेट लैग. JET लैग. So I always get jet lag after flying to Asia because of the time difference. Tourist trap. अब टूरिस्ट ट्रैप क्या होता है? कि सिंपल सी बात है, ट्रैप का मतलब होता है जाल, है ना. जब आपको फंसा रहे हैं किसी चीज में, लाइक अ प्लेस दैट जो बताया जाता है कि नहीं यार, दिस इज द बेस्ट प्लेस, है ना, टू अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट, बट ऑफर ओवर प्राइस्ड है या लो क्वालिटी सर्विसेज है. ठीक है. आपने कोई होटल वोटल बुक करवा लिया, बट जाके देखा तो सब बेकार था. सो दिस इज कॉल्ड अ टूरिस्ट ट्रैप. ठीक है. तो कैसा था आपका जी, आपकी जर्नी, आपका ट्रिप कैसा था? नहीं यार, इट वाज जस्ट अ टूरिस्ट ट्रैप. ठीक है. वी वर गॉन. बैक पैकिंग. अब बैक पैकिंग भी एक ट्रैवलिंग का स्टाइल है. बैक पैकिंग ट्रैवलिंग होती है जिसमें कोई तामझाम नहीं लेकर जानी है. आपने एक बैग पैक रखा. ठीक है. उसमें बस अपनी थोड़ी यूजल चीज, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गोरे बैग पैक लेकर आते हैं, वो मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं. हम जैसे तो, है ना, ये भी चाहिए, मंडे का भी चाहिए, एक नाइट सूट भी चाहिए, सुबह का भी चाहिए, तो वी तो हम तो बहुत बड़े बड़े बैग भरते हैं. सो ओनली अ बैग यूजली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ऑफर ऑन अ बजट. ठीक है. एंड आफ्टर, जैसे सिंपल है कि आफ्टर ग्रेजुएशन वी वेंट बैग पैकिंग फॉर 6 months. देखो, बैग पैकिंग पे 6 महीने रह के आ गया वो बंदा. ठीक है. तो दिस इज द बैग पैकिंग ट्रिप. आप भी कई बार कहते हो कि चलो यार, लेट्स गो फॉर अ बैग पैक पैकिंग ट्रिप. ओवरबुक्ड. Yes. ओवरबुक्ड रिजर्वेशंस बहुत हो जाती हैं, जगह ही नहीं मिल रही. When more reservations are made than available seats or rooms. Okay. The flight Yes. was overbooked. The hotel was overbooked. Layover. Layover. Layover का मतलब क्या होता है? When you are having short stay, Yes. short Stay. stay in a place between two parts of a journey. जब आप कहीं जा Yes. रहे हो, बीच में अब आपको एक स्टे अगर होता है तो. So madam, we had a 6 hours. We had a 6 hour layout in Amsterdam before our flight to Rome. Rome जाने से पहले somebody is having a layout and layover, sorry, at Rome. Please. Cruise.
क्रूज ट्रिप आपको पता ही है, जो लोग क्रूज ट्रिप करते हैं, trip on a large ship for pleasures, and this must be for more than 2-3 months का trip ये होता है. Okay, so this is Yes. all about here.